So friends, welcome to another video on some terminologies that are being used in Finacle. When we open the loan account, there are certain terminologies which we should be very much aware that we should only change when we know its meaning. What impact does it have on the loan accounts or the procedure or the systems? So before that, मेरी वेबसाइट BankTekSkills में बहुत सारे मैंने फिनिकल के लाइव वीडियोस sales and selling techniques, how to sell anything in the banking and insurance sector, what strategies, or advanced module on Finacle, modules on Hindi and English and Finacle, simple Finacle, learners Finacle I have added there. तो आप वहाँ जाकर आप मेरी वेबसाइट पे जाकर मेल आईडी पासवर्ड डालकर आप यू कैन सब्सक्राइब टू इट और वहाँ आप थोड़ा सा पेमेंट करिए so that you can have access to lot many videos और मैं आगे बहुत सारे videos डालने जा रहा हूँ. So from now onwards मैं mix use करूँगा. तो there are certain people who understand Hindi only, उनको हिंदी ही समझ में आती. there are people who केवल उनको इंग्लिश ही समझ में आती है, right? So थोड़ा सा mix करके चलेंगे and so that it is useful to all of us, right? And thanks to all of you for having subscribed my YouTube channels. My followers, my subscribers are increasing and more than 2 lakh people have viewed my videos, so that proves that I have added some value to all of your knowledge and you are taking cognizance of that. So do subscribe, press the bell icon of my YouTube channel so that आप notifications miss ना करें. और ये बहुत सारे topics मैं आगे भी add करने जा रहा हूँ slowly gradually. So in 2 months time you'll have a lot of videos, many videos on various topics, latest banking terminologies and sales and selling techniques, insurance, and various like ombudsman, what is CRR, SLR, what is money laundering, 3 stages in money laundering, उसका effect क्या होता है. बहुत सारे videos, काफ़ी कुछ तो मैंने डाले लेकिन इससे ज़्यादा मैं बहुत सारे अभी ऐड करने वाला हूँ. तो बिफोर द प्राइसेस गो अप ऑफ माई दीज मॉड्यूल्स ड्यू टू कॉस्टिंग भी आती है, तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे जाकर आपको उतनी ही आसानी होगी. तो वही वीडियोस आप कम अमाउंट में भी देख पाएंगे, वो जो आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा. बिकॉज आफ्टर एडिंग दोज वीडियोस आई विल बी forced to increase my fees, right? So first, that when we open a loan account, तो उसमें एक पैगिंग फ्रीक्वेंसी, एक देयर इज अ टर्मिनोलॉजी यूज, पैगिंग फ्रीक्वेंसी. पैग किसे कहते हैं? जो भी लेट्स से कि एमसीएलआर है या बैंक रेट है या बेस रेट है, उससे हमने पैग कर दिया. तो बैंक इंक्रीजेस एमसीएलआर, डिक्रीजेस एमसीएलआर, बैंक आरबीआई चेंजेस बेस रेट और इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी हिसाब से इट बिकम्स फ्लोटिंग. तो एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द अकाउंट शुड बी रिव्यूड इज मेंशन्ड हियर. पैगिंग फ्रीक्वेंसी में किस महीने में, किस कौन से दिन ये पैगिंग जो हमने रिव्यू करनी है. इफ नो वैल्यू इज मेंशन दैट इट मींस दैट यूजर इज गोइंग टू टेक केयर इफ इट मैन्युअली और प्रोसीजरली. अगर आपने इसको नील छोड़ा तो ये मैन्युअली आपको सारे कुछ देखने पड़ेंगे. तो फर्स्ट इज पैगिंग फ्रीक्वेंसी, राइट? तो पैगिंग मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैग कर देना. पैग मतलब इस तरह से उसको बांध लेना अपने साथ, राइट? तो वो आपने रिव्यू करना है कि यस, वैसे वेदर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है या अगर बढ़ा या घटा है तो कौन सा हमने चार्ज करना है. फर्स्ट इज पैगिंग फ्रीक्वेंसी. दूसरा जो एक टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज कलेक्ट इंटरेस्ट. तो ऑफकोर्स इट हैज टू बी वाई, क्योंकि हम लोन जब देते हैं तो इंटरेस्ट तो हम कलेक्ट करेंगे ही करेंगे, राइट? इट शुड बी टिक्ड, राइट, विद द राइट मार्क. देन इंटरेस्ट मिनिमम मैक्सिमम, तो एक रेंज होती है जिसके बीच में हम उसकी प्राइसिंग करते हैं. तो दैट रेंज विल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट व्हेन यू ओपन द अकाउंट. आपने इसमें कुछ नहीं छेड़ना है. कस्टमर प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, अगर कोई कस्टमर को हमने किफ आईडी से रिलेटेड कोई प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, दिस इज जनरली इन केस ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स. तो जहां बोथ डेबिट एंड क्रेडिट प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट वुड बी डिफॉल्ट पॉपुलेटेड इफ इट इज मेंशन्ड एट कस्टमर लेवल. तो प्लस मींस वो इंटरेस्ट रेट में ऐड हो जाएगा, माइनस मींस वो इंटरेस्ट रेट से कम हो जाएगा. दैट इज प्रेफरेंशियल, हम उसको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं.
तो ये जो है कस्टमर लेवल पे है, अकाउंट लेवल पे नहीं है, रिमेंबर दिस। तो अकाउंट लेवल मींस उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए जो हम खोल रहे हैं, एंड कस्टमर लेवल मींस जितने भी उस कस्टमर के अकाउंट्स इन द बैंक्स, लोन अकाउंट्स, उन सब में वो प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट मिलेगा। The parameter is set as scheme for default population. The value can be overridden by the user. और आप इसको override भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि गलत दिया है या जो भी है, आप उसको you can change it, बट आपके पास प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए। तो ये तो हो गया कस्टमर प्रेफरेंशियल। दूसरा हुआ अकाउंट प्रेफरेंशियल। कस्टमर कैन मेंशन प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट दैट नीड्स टू बी ऑफर्ड टू इन दिस अकाउंट ओनली। केवल जो हम अकाउंट खोल रहे हैं केवल उसी में। तो दिस विल बी ओवर एंड अबव द कस्टमर प्रेफरेंशियल। ये भी ध्यान रखिए, अगर हमने कस्टमर प्रेफरेंशियल में 0.5 प्लस किया हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट +5, और हमने अकाउंट प्रेफरेंशियल भी 0.5 किया है, तो टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो भी रेट है प्लस 0.5 प्लस 0.5 इज 1%, तो 1% ऐड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपने कस्टमर प्रेफरेंशियल दे दिया लेट्स से 1% का, और आपने अकाउंट प्रेफरेंशियल 0 रखा, तो उसमें केवल 1% ही बढ़ेगा। आपने कस्टमर प्रेफरेंशियल में 1% दिया, अकाउंट प्रेफरेंशियल में फिर 1% दे दिया, तो 2% ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो अकाउंट प्रेफरेंशियल, कस्टमर कैन मेंशन preferential interest rate that needs to be offered to this in this account. This will be over and above the customer preferential interest. If both values are mentioned, that the system adds or subtracts the values from the normal interest rate, and the net effective rate would be applied to the account. If the interest rate have been deducted, then it should be mentioned with a negative sign. अगर कम करना है तो negative sign, ऐड करना है प्लस के साथ। देन देयर इज अ इंटरेस्ट रेट कोड। ये सिस्टम डिफाइंड होता है, आपने इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कार लोन है, एक इंटरेस्ट रेट कोड होगा, तो जैसे जैसे कार लोन का इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाएगा, वो अकाउंट में उसी हिसाब से ऊपर नीचे चेंज होता चला जाएगा। Then there is an interoperable for CCY holiday, currency holiday or broken period. When a broken period for pegging is encountered, when the interest rate period is the same as the pegging frequency, and the base rate table with period slabs is used, then option to interpolate should be provided to arrive at the interest rate through a parameters would be determined whether interpolation is required for broken period or not. Right? तो this is अगर वो pegging frequency के अलावा दिया हुआ है, अगर वो दोनों सेम ही अकाउंट ओपनिंग एंड pegging frequency, तो फिर आपने वो उसको नेटिंग करके देखना है, ठीक है। So the point to be reiterated here is, if this CCY holiday is flag is Y, yes, and when the interest period is same as pegging frequency. Interest period means when the interest would be, up to what period interest would be charged in the account, and the pegging frequency is the same, then the rate will be fixed only till the entered pegging review date. तो जो भी रिव्यू डेट डाली है हमने, वहीं तक ही वो पैगिंग करेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, ये स्क्रीन दिखाई देती है, आप एरो में देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट, प्रेफरेंशियल CCY, then preferred CCY, that will be INR itself, right, and interest rate based on the drawdown, so it has to be no by default, right. So एक टर्मिनोलॉजी और आती है लोन पीरियड। लोन पीरियड मीन्स टेनर मीन्स रीपेमेंट पीरियड कितना है। सपोज इफ इट इज 5 years फॉर कार लोन और 20 years फॉर होम लोन, तो लोन पीरियड या रीपेमेंट पीरियड वही आएगा। आप मंथ्स में लिख सकते हैं, और ईयर्स का अगर दे रखा है ईयर्स में लिख सकते हैं। होल्ड इन ऑपरेटिव अकाउंट फॉर अमाउंट ड्यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट यू आर सपोज टू एंटर व्हेन यू आर ओपनिंग एनी लोन अकाउंट, डिपेंड्स, राइट। सो होल्ड इन ऑपरेटिव अकाउंट फॉर अमाउंट ड्यू। अब कुछ अकाउंट ऐसे हैं जैसे ओडी अगेंस्ट एफडी, तो एफडी हमारे पास है, लोन हमारा कभी बैड नहीं होगा, वी विल बी एबल टू रिकवर द अमाउंट। अगर हमने होल्ड इन ऑपरेटिव अकाउंट फॉर अमाउंट ड्यू टिक कर दिया, इफ दिस बॉक्स इज टिक्ड, इट मींस द वैल्यू इज सेट एज वाई, देन द यूजर कैन मेक अ लियन ऑन दिस ऑपरेटिव अकाउंट इंडिकेटेड। फर्ज कीजिए कोई ईएमआई नहीं आई और उसका ऑपरेटिव अकाउंट है,
और हमने जब एक लोन अकाउंट खोला था हमने इसको टिक कर दिया कि यस होल्ड द ऑपरेटिव अकाउंट व्हेन अमाउंट इज ड्यू, तो जो भी बैलेंस है वो उस पर लियन मार्क हो जाएगा, कस्टमर उसको निकाल नहीं पाएगा, सो दैट बैंक कैन रिकवर इट्स ईएमआई। And process of marking lien on operative account can be done as the batch job, that is again at the center level. Then there are various repayment methods, very important. If it is E, आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ई सिस्टम रिकवर्स वॉट एवर इज अवेलेबल इन द ऑपरेटिव अकाउंट। तो अगर हमने होल्ड एन ऑपरेटिव अकाउंट ड्यू यस किया तो उसमें क्या है, अगर ई कर दिया तो सिस्टम विल रिकवर वट एवर इज अवेलेबल इन द ऑपरेटिव अकाउंट। जरूरी नहीं वो पूरी ईएमआई रिकवर करेगा, जो भी बैलेंस है इक्वल टू दैट वो रिकवर कर लेगा फॉर सर्विसिंग द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और ईएमआई। टी सिस्टम क्रिएट्स ए टीओडी एंड रिकवर्स द एंटायर ड्यूज फ्रॉम द ऑपरेटिव अकाउंट। अब हो सकता है कुछ डेबिट बैलेंस आ जाए, अगर हम जब ईएमआई डेबिट कर रहे हैं तो कर देगा, अलाउ कर देगा, और हमने टी किया है, और जब भी वो कुछ जमा करेगा जो भी ओवरड्राफ्ट है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अगर हमने इस रीपेमेंट मेथड को एन कर दिया तो नो रिकवरी वुड बी मेड। डी कर दिया रिकवरी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, ईसीएस और नैच मैंडेट। एम and if it is M, multi-source repayment, there can be multiple sources also, so options generally E or you can say N or T. Generally it is E. TOD we don't allow without approvals, but that option is also available, right? So let's go ahead, and then last is acknowledgement of debt. So it is 3 years from the start date. So we have to give the, जिस दिन हम लोन दे रहे हैं वही हमने एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट डेट डालनी, जिससे लिमिटेशन जो है 3 साल तक के लिए एप्लीकेबल होती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्क्रीन फॉर एंटरिंग रीपेमेंट डिटेल, राइट? पेमेंट शेड्यूल और रीपेमेंट पीरियड, राइट? सो व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज, व्हाट इज इंस्टॉलमेंट आईडी, राइट? ऑन व्हिच डेट ऑफ द मंथ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकवरिंग द ईएमआई, how many EMIs are scheduled, installment start date कब से शुरू हो रहा, number of installments, it is 1 year, 12, you can see on the screen. So various fields are auto populated, some fields you have to just to confirm that it is as per the criteria we are opening the loan for. Another important thing is interest demand during moratorium. We give moratorium also in certain loans, right? Not to be considered as for installments in repayment schedule, so that holiday has to be given और वो आगे की EMIs में जाकर वो कंपाउंडेडली ऐड हो जाता है। द इंटरेस्ट डिमांड रेज्ड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स व्हाइल डिफाइनिंग द रीपेमेंट शेड्यूल। तो जो भी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होगा उसमें दिस मोरेटोरियम उसमें ऐड नहीं होगा। फॉर नॉन EMI accounts, interest demand will not be shown in amortization schedule, but the total number of installments shown above the schedule was calculated including the interest demand and moratorium period. So it is already added by the system itself of its own, right? So this is just for your increasing your knowledge. So another menu option, HLAGI, is a very important menu option for inquiring in any loan account. There are various options available, various leverages are available, that you want from this date to this date. You can change anything, any particular amount, any particular frequency you can choose. There are a lot of details available here, right? And then HLAGI, inquiring on loan, how much amount is overdue, how much is regular, how much, when it became overdue, when it became substandard and all that. So HLAGI, please remember this. So lastly, few menu options, HOAACCL, this is for cash credit loan accounts before verification. Then HOAACVCL, again I tell you these are term loans and these are cash credit. It may vary from bank to bank, slight variations in command like, right? So in somewhere we have HOAACC only, so slight variation may be there, but basic concept is the same, right? Collection of fees, refund of fees collected, right? What is drawdown schedule maintenance, all these are available here. So not all are to be used, like HCL, S pay, scheduled pay.
Unscheduled pay. Scheduled pay means if suppose EMI has been missed and customer comes to the branch and he wants to deposit that EMI, that is scheduled loan payment. Unscheduled is part prepayment, unscheduled loan payment, right? Then customer loan payment, HCLC pay, H payoff, they want to adjust the whole loan amount. All these options are available. You don't have to see each and everything. Like HLADGEN, HLADGEN, demand. How much is demand due in that account? So all these we can view from these options. We don't have to use all the menu options given on your screen. And the last is loan overdue position inquiry, HLAOPI. So this was a video to give you some insight why those fields are mandatory, which you have to see very carefully, right? So that time when you are opening the account, be careful. Don't tinker with any field which is not required to be tinkered. Only change that which is you are supposed to do it. Otherwise, it will have a wrong ramification for your this thing. So with this is all about commercial loans when we are opening a working capital or commercial loan in any. So slight variations may be there in the commands in different banks using Finacles, but basic concept remains the same. So I hope you liked some parts that have been explained in this, in the sense that terminologies that I've tried to explain to you is regarding full videos on Finacle account openings, cash credit, loan accounts, car loan. You can go on to my website BankTekSkills.com, subscribe there, your email ID and password, and pay a certain amount. This is the right time to log in because prices may increase in future when I'll add more videos. So if you are able to get the subscription or right now, so that will be of immense use to all of you. Again, thanks from bottom of my heart for all of you for supporting me in this endeavor to support all of you, to help all of you whatever I have learned in my career. So once again, thank you so much.